Good morning all students. In today lecture we will discuss chapter 4 revision, that is linear equation in two variables. So first of all we will discuss then what is the meaning of linear equation in two variables. So linear का meaning क्या होता है students? Having degree is 1. Equation का meaning क्या होता है? If an algebraical expression वी विल पुट इक्वल्स टू जीरो, किसी भी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में अगर इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे देन दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन. एंड इन टू वेरिएबल मीनिंग इज दैट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर प्रेजेंट देयर. सो फर्स्ट व्हाट इज द जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in two variables. So general form of linear equation in two variable is ax plus by plus c is equals to 0. That is the general form of linear equation in two variable where students a b c are real numbers. a b c क्या होंगे? आपके रियल नंबर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3y minus 7 is equals to 0. Given equation is a linear equation because it follow the standard form ax plus by plus c is equals to 0. That's why on compare a value 2, b value 3 and c value minus 7. Next, second, 3x minus 7 is equals to 0. So given equation is a linear equation or not? Given equation is a linear equation, but is present in two variable or one variable? So it is present only one variable. Then how we will convert into two variable? So friends, how we will convert it into two variable? Which variable is not present here? X present है. कौन सा variable present नहीं है student? Y is not present. Okay, so here which variable is not present? Y. So we will write down plus. जो variable present नहीं है उसको क्या write करोगे? 0.y minus 7 equals to 0. Now here a is 3, b is 0 and c value minus 7. Now that the given equation is linear equation in two variables. Understand students? So if equation is not given in two variables, then how we will convert? The variable which is not present we will put 0 dot. 0 dot y का मीनिंग क्या है? 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. So what is your answer? Answer will come 0. आपका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 0 ही बनेगा. 0 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही बनता है. ओके. नाउ नेक्स्ट, इफ गिवन टू यू सपोज 3x plus 5y minus 3.5 bar equals to 0. So इस टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको. सेम वही क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन है, गिवन इन टू वेरिएबल्स है. So find out the value of a, b and c. So here on comparison a is 3, b is 5 and c is minus 3.5 bar. एंड बार आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. बार का मीनिंग क्या होता है? रिपीटिंग. जिस नंबर पे बार प्रेजेंट होता है उसका मीनिंग क्या है? दैट नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो दैट्स व्हाई बार इज present here. Understand? Now second, how we will discuss, then how we will formulate our to convert word problem into linear equation. How we will convert वर्ड प्रॉब्लम इनटू लीनियर इक्वेशन. वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? फॉर दैट सम साइन. इफ इन इक्वेशन कम अगो माइनस, बिफोर माइनस, डिक्रीजिंग माइनस, नाउ प्लस, हेंस प्लस,
after plus increasing plus is equal times multiply and of also multiply. So if this type of such type of word is found, we find in the given equation, then how we will formulate then in linear equation. Suppose we will consider one example. अब देखो इसी पे एक example consider करते हैं. For example, if the present age of sun is thrice the present age of his mother. If the present age of son is thrice the, इसको चेंज कर लेते हैं वरना इसमें तो जो प्रैक्टिकल है वो डिफरेंट हो जाएगा आपका, सन एंड हियर मदर. If the present age of mother is thrice the present age of his son, her son, his son, then how we will formulate linear equation in two variables. So first of all students, here we will identify then which two unknown quantities are present here. So here two unknown quantities, first is the age of mother and second is age of his son. So let present age of mother be x here and second is present age of his son be y year. Then according to question students क्या बनेगा? The present age of mother, what is the present age of mother? X is means equal, thrice means 3, thrice the present age of his son. So of means multiply, son क्या है? Y. So x is equals to 3y, or we can write x minus 3y plus 0 is equals to 0. Any problem students? If in question given to you, if the present age of mother is the 26 year older than the son, now 3 years ago there is the age product is that of 26, then how we will form the equation. अब second type का question देखो, इसी पे बेस देखते हैं. Next question. If sum of present ages of two friends are 40 years, क्या है? 40 years है, and the product of their ages from 3 years ago were 25. Form equation. आपको equation form करनी है. So here again
two unknown variables are present here. We don't know that what is the present age of first son, and also we don't know that what is the present age of his second friend. So let present age of first and second friend be X and Y years. Then now we will find out that in question given that their product is from 3 years from 1. Then the product of their age is from 3 years. From 3 years, then ago or after, यहाँ पे mention नहीं है, mention करो the product of their ages from 3 years ago. ये है ago. So from 3 years ago, their ages, ago meaning क्या है? Minus. So first friend की एज क्या बनेगी? X minus 3 multiply second friend y minus 3 is equals to 25. Then you will multiply that linear forming equation. So क्या students ये linear equation form होगी? Does this equation form linear or quadratic? Quadratic, right? Because x multiply y. But understand how we will form equation? Any problem? Now next type question we consider that in your book is given that taxi fare हो गया, scooter fare हो गया, bus fare हो गया, then how the we will make equation. Next question given है देखो, a taxi fare in a city is as follows. For first kilometer टैक्सी फेयर गिवन है फॉर फर्स्ट किलोमीटर चार्ज इज 20 rupees and after subsequent kilometer charges are 15 kilometer or 15 rupees per kilometer. Form equation. Then how we will form here equation? So here two unknown. We don't know that total distance क्या है? Total distance covered by the taxi, and also we don't know what is the total fare which will paid. टोटल फेयर क्या पेड कर रहे हो और टोटल डिस्टेंस क्या है. सो लेट टोटल डिस्टेंस बी x किलोमीटर एंड टोटल फेयर बी y रुपीज. नाउ स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस आपने क्या कंसिडर की है? x किलोमीटर. But according to question, the charge for first kilometer का चार्ज क्या है? 20 rupees. So what is the remaining distance? Total distance x kilometer है. We already paid charge for 1 kilometer. So remaining distance is x minus 1 kilometer or not? X minus 1 kilometer. And what is the चार्जेस फॉर रिमेनिंग किलोमीटर? 15 रुपीज पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर का चार्ज 15 रुपीज है. सो व्हाट इज द चार्जेस फॉर x माइनस 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय द x 15. सो दैट इज फॉर 15 रुपीज. नाउ हाउ वी विल फॉर्म इक्वेशन? टोटल फेयर y इज इक्वल्स टू फर्स्ट किलोमीटर चार्ज इज 20, सो 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस फॉर रिमेनिंग distance is 15, so 15 multiply x minus 1. Simplify y equal 20 plus 15x minus 15. Y equal 20 minus 15, 5.
plus 15x. So from here we obtain equation 15x minus y plus 5 equals to 0. So that linear equation in two variables are formed or not? So here we are forming the linear equation in two variable. Understand? अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस पे भी इस क्वेश्चन आपका टैक्सी फेयर हो, बस फेयर हो, टू व्हीलर स्कूटर का हो, ट्रेन का हो, सेम कॉन्सेप्ट होगा। फर्स्ट किलोमीटर और 2 किलोमीटर का भी हो सकता है, 3 किलोमीटर का भी हो सकता है। सपोज हियर गिवन टू यू द टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर is 20 rupees. So 2 multiply 20, then x minus 2. Okay. Now we will consider the other question. Concept same है, that is lending library question. Next question is, a student suppose joining the library and the administrative says that for first 3 day charge is fixed and after per day the charge is 10 rupees. For first 3 day fixed charge and after that charge per day will be 20 rupees. For first 3 day charge is fixed and after that the charge per day will be y rupees. Okay, पर डे चार्ज क्या है और y रुपीज है। एंड स्टूडेंट join the library for 7 days and he paid 50 rupees. फॉर्म इक्वेशन इसको कट कर दो। चार्ज पर डे एक्स्ट्रा चार्ज है, 3 डे का फिक्स है, देन एक्स्ट्रा चार्ज, देन हाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशन। So here two unknown quantities. First is fixed charge, second is charge per day. Two unknown, we don't know. Then what is the fixed charge for 3 day and what is the charge for extra day? So total students ने total how many days the students join the library? 7 days. So out of 7 days, 3 day charge is fixed. Let x rupees. Then out of 7 3 day fix है, so remaining extra day क्या हो गया 4. So 1 day charge y है, so 4 day का क्या bनेगा 4y. So let fixed charge for first 3 day be x rupees and after charge एडिशनल डे और चार्ज एक्स्ट्रा डे बी वाई रुपीज. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मेनी 3 days आर फिक्स, सो एक्स प्लस हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज आर प्रेजेंट हियर 4 day. 1 day चार्ज वाई है, सो 4 day का चार्ज क्या होगा 4y. 4y इज इक्वल टू टोटल चार्ज paid by the student is 50 rupees. So here student first 3 day का फिक्स चार्ज है. सपोज करो एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि आपको अगर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन की तो स्टार्टिंग फर्स्ट डे का चार्ज है आपको 100 रुपीज पेड करना होगा.
आफ्टर दैट डिपेंड्स ऑन यू, देन यू विल कंटिन्यू और नॉट। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो पर डे एक्स्ट्रा चार्ज होगा आपका 30 रुपीज। 3 डे का चार्ज फिक्स 100 रुपीज। सेम कंडीशन इज हियर फॉर फर्स्ट 3 डे चार्ज इज फिक्स। अब वो फिक्स चार्ज क्या लिया आपने कि 3 डे का टोटल चार्ज x है। नाउ एक्स्ट्रा डे क्या है y, सपोज करो आपने y डेज के लिए हो, तो ये क्या है आपका 4 डे एक्स्ट्रा है, तो y क्या है यहाँ पे चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा पर डे चार्ज y है, सो 4 डे एक्स्ट्रा तो 4y बनेगा इज इक्वल्स टू 50। So in that chapter students important is that how we will form the linear equation. One more important question. The cost of a pen is 3 more than the 2 times of cost of a notebook. Form an equation. So first of all students, here we will identify that how many unknown quantities are present here. So here unknown quantities 2, we don't know what is the cost of a pen and what is the cost of a notebook. So let cost of a pen is equals to x rupees and second is cost of a notebook is a y rupees. Now according to question, so according to question क्या होगा, the cost of a pen, what is the cost of a pen, x is means equal 3 more than means plus 2 times 2 times means multiply of what, cost of a notebook. So x is equals to 3 plus 2y over x minus 2y minus 3 is equals to 0. So that is your linear equation in 2 variables or not? So that is the linear equation in 2 variable. Understand students? So in first part we discussed that how we will formulate the linear equation in or the word problem into the linear equation. Understand? Now we will discuss the solution of linear equation. How we will finding out the solution of a linear equation.